കൈ മറക്കില്ല. ഇത് മെയിനായിട്ട് വീഴും. ചുമ്മാ ഓടി നടന്നു. ഇത് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓടി നടന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ. അന്നേരം ഫോക്കസിങ് കിട്ടും. റൗണ്ട് നടന്നു. लाइव है? हाँ, ये लेके ये पकड़ो। इधर बैठो, इधर बैठो और सामने बैठोगे। वेरी गुड। नीचे एक बार जाके आ सकते ऐसे ही जाएगा। अच्छा पलट करने से नहीं होगा। दूर से नीचे से ले जाते हैं। Congratulations.
Prince, I heard that you had some rank there. Yeah. Which subject? BSc IT, Information Technology. Very good, congratulations. And you look very tall for this place, side of the earth, na? Yeah. How tall are you? खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगा दो, क्योंकि ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सभी को जय यीशु। परम आदरणीय धर्माध्यक्ष माँ जोसेफ कोलंबरम CMI जगदलपुर धर्मप्राण, अति सम्मानीय पूर्व धर्माध्यक्ष माँ बोस्को पुतौर मेलबर्न धर्मप्राण ऑस्ट्रेलिया, आदरणीय धर्माध्यक्ष माँ लेफ्टिनेंट नरिकुलम चांगा धर्मप्राण, आदरणीय पूर्व धर्माध्यक्ष माँ जोसेफ पुनर CMI आदिलाबाद धर्मप्राण, आदरणीय फादर थॉमस वणकुंकरा CMI विकार जनरल जगदलपुर, आदरणीय फादर जोशी ताम्रश्री CMI विकार जनरल CMI कांग्रेगेशन, आदरणीय फादर संतोष कोतेरिल CMI प्रोविंशियल सुपीरियर निर्वल प्रोविंस जगदलपुर, आदरणीय सिस्टर आन मैरी DBS सुपीरियर जनरल, सभी मेजर सुपीरियर्स, उपस्थित आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, उपस्थित सज्जनों, विशेष रूप से पालाकरा परिवार से आए हुए हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे धर्मप्राण के सभी आदरणीय सदस्यों, आप सबों को पुनः जय यीशु। साथ साथ आज की इस पावन कार्यक्रम में आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एक ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि के नाम पर एकत्रित हुए हैं, जो स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मां सर्वस्व पालकरा के अलावा और कोई नहीं है। वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और हमारी समुदाय के प्यारे सदस्य थे। आज हम यहाँ उनके असाधारण योगदानों को याद करने और सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। और वे एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो हमेशा उच्च विचार रखते थे। प्रार्थनामय जीवन, हमारे भेड़ों के प्रति आत्मिक प्यास एवं प्यार, जिसने हमारे धर्मप्राण को विश्वास के खंभों को मजबूत किया। सही समय पर नन्हे पौधों पर पानी दिया। ईश्वर ने अपने गहन विश्वास के साथ धर्मप्राण को आगे बढ़ाया। ईश्वर पर पूर्ण आशा और भरोसा रखकर हर एक विश्वासी भाई बहनों को ईश्वर तक पहुंचाने की इच्छा रखता था एवं मिशनरी उत्साह से भरे हुए थे। आज हम इस महान पिता के बच्चे यहाँ उनके शानदार मिशनरी कार्यों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम इस महान शासक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके लिए अपना प्यार जाहिर करें। आइए हम प्रेयर डांस के साथ इस स्मरणोत्सव दिवस की शुरुआत करें। अब मैं हमारी बहनों को प्रेयर डांस के लिए आमंत्रित करती हूँ, तो आइए हम तालियों से इनका स्वागत करें।
हमें ईश्वर की ओर मनमोहित करने के लिए। किसी का स्वागत करना सबसे शानदार अभिव्यक्ति है जो दूसरों को स्वीकार करने, प्यार दिखाने, सम्मानित करने, अपनी भावना का अवसर है। इससे दूसरों के दिल में खुशी की सबसे गहरी भावना पैदा होती है। अब मैं आज के अतिथियों को संबोधित करने के लिए महामहिम धर्माध्यक्ष मां जोसेफ कलमप्रांत CMI को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे स्वर्गीय बिशप साइमन स्टोर के पुण्य यादों को लेकर आज हम एक साथ आए हुए हैं। मिसा बलिदान चढ़ाते विशेष प्रार्थना करते हुए हम आज के दिन की महत्व को हम अनुभव किया। अभी हम इस हॉल में जमा हुए हैं उनके पुण्य यादों को लेकर। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सबों को दिल की गहराई से इस समारोह में विशेष स्वागत करता हूँ। विशेषकर हमारे सम्माननीय बिशप मेलबर्न से उड़ीसा की तरफ आकर 3 सप्ताह मात्र हुए हैं। फिर भी जैसे बिशप जी को याद दिलाया, बिशप जी बड़े उत्साह के साथ मुझे बताया जरूर मैं आऊँगा। बिशप जी के धन्य उपस्थिति के लिए मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ और आपको इस समारोह में स्वागत करता हूँ। बिशप एफ्रेम जब से मैं बिशप जी को आज के समारोह के बारे में याद दिलाया तो वहाँ पर कार्यक्रम के बारे में मुझे अवगत कराया। फादर का रिट्रीट और अन्य बहुत सारे प्रोग्राम के बीच में भी समय निकाल कर आए बिशप एफ्रेम को मैं विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बिशप जी जोसेफ कुंदन केरल में थे। 2 दिन पहले भी जब मैं बुलाया तो बोला मैं केरला में है, वापसी यात्रा में है। अगर वहाँ पहुँचने के बाद कैसे लगता है मैं देखूंगा और इस तरफ आऊँगा। बिशप जी जब भी सफर करके फिरोजा में कल रात को समय विदा कर बड़े सुबह निकल कर हमारे बीच आए हैं, आपको मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे CMI धर्म समाज के विकर जनरल फादर ज्योति तामरशेरी, उनको कोई स्वागत की जरूरत नहीं है। हमेशा हमारे कार्यों में साथ देते हुए हमेशा कार्यों को करने में उत्साहित हैं। विशेषकर अभी जो बिशप साइमन स्टोर के जीविका को लिखने के लिए ज्योति तामरशेरी का पूरा के पूरा सहयोग और नेतृत्व उसमें है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിശ്രമവും നേതൃത്വവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മാണി പയസ് എന്ന ഒരു ലേഖകനെ കണ്ടെത്തി അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് സംലഭ്യമായിരിക്കുക. ज्योति अचन का कड़ी परिश्रम को समर्पण की इस भावना को मैं अभिनंदन करता हूँ. आज के समारोह में आपको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ. हमारे फादर सोनी बालात्रा वे बिशप जी के कसिन हैं, फर्स्ट कसिन. हमेशा बिशप जी के बारे में बड़े उत्साह के साथ कार्यों को करने में साथ दिया करते थे. लेकिन मृत्यु के समय फादर जी को यहाँ आ नहीं पाए. लेकिन पहला वर्षगढ़ में
यहाँ पर बहुजने की कष्ट किए തോണിയച്ചന് ആത്മീയമായ സ്വാഗതവും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. हमारे जनरल फादर थॉमस वडकुंद्रा हमेशा हमारे साथ हैं. फादर जी को मैं स्वागत करता हूँ और हमारे जनरल रोल्स के प्रोविंशियल फादर संतोष जी को भी मैं स्वागत करता हूँ. और പാലാത്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്ത് പല എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ അസൗകര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സൗകര്യമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു വലിയ ബന്ധം പിതാവ് പാലാത്ര കുടുംബത്തിലൂടെ ജഗതപൂർ മിഷന് നൽകിയ വലിയ ബന്ധം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി ഉണർത്തുന്ന വലിയ അനുഭവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ പാലാത്ര കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി നിമന്ത്രണങ്ങൾ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. हमेशा परिवार से जुड़े रहने का ईश्वर की कृपा मुझको मिला है. मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको. मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. हमारे फादर लोग जो भी आज यहाँ पर सवार होते हुए भी अपने अपने पति के कार्यों को संभाल कर बड़े त्याग की भावना लेकर विष्णु जी के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है उसी को प्रकट करते हुए हमारे साथ में सब फादर को मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. हमारे सिस्टर मेजर सुपीरियर आप सबों को प्रोविंशियल और जनरल और सब कोई यहाँ पर हैं, उन सबको मैं सभी दिल से इस समारोह में मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ. हमारे पल्लियों से आज यहाँ पर पहुँचे कैथेड्रल पार्टी से और अन्य पार्टियों से यहाँ पर आज मौजूद हमारे प्रिय माता पिताएं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों को मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ और इस समारोह में विशेष स्वागत करता हूँ. और एक शब्द मैं बताना चाहूँगा. 1972 जगदलपुर धर्मप्रांत उसकी सिरोमरकाट कलीसिया के लिए जैसे संत पापा इसको सौंप दिया तो CMI कॉन्ग्रीगेशन इसका बड़ा दायित्व को अपने कार्य शैली में लेकर प्रेषिताई कार्य के वहाँ पर प्रारंभ किए. तब से लेकर 50 वर्ष सुवर्ण जुबिली मनाते हुए बिशप साइमन स्ट्रोक हमारे साथ किए. प्रार्थना और जैसे आज फादर प्रोविंशियल अपने उद्बोधन में बोले बड़े उत्साह के साथ समर्पण की भावना से प्रार्थना करते आज भी वही प्रार्थना हमें शक्ति और हिम्मत प्रदान करते हुए उनके जीवन सानिध्य हमारे साथ हैं. उसके लिए कोई तर्क नहीं. सर्वश्रेष्ठ പിതാവ് മിഷന്റെ ആരംഭം മുതൽ 50 വർഷവും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും സാന്നിധ്യമായി നമ്മോടൊപ്പം ആയിരുന്നു. ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതിവിധികളെയെല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മോടൊത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യം ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോട്ടോ ജീവന്റെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ മോട്ടോ ഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് പീപ്പിൾ, ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി. അത് തന്നെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെയും പേരായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്, അത് സർവ്വ പിതാവിന്റെ ജീവിത കഥ എന്നതിലുപരിയായി ജഗദൽപൂർ മിഷന്റെ വളർച്ചയുടെയും ഒരു
ഒരു പുരോഗതിയുടെയും അതിൻ്റെ കടന്നു പോകുന്ന നാൾവഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം തീർച്ചയായും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാത്മകമായി നമുക്ക് വായിച്ച് മിഷൻ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. साइमन शो के प्रति जो पुस्तक बना हुआ है वह उनकी एक जीवन की कहानी से बढ़कर पूरे मिशन जगदलपुर मिशन के रूप और भाव किस प्रकार यहाँ पर बने हुए हैं उसका सुंदर प्रस्तुति उसमें है। उसी के लिए जो माणी पायस जो लेखक हैं उसकी विशेष सहयोग और भूमिका उसने जरूर निभाए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी अगुवा करके हमारे साथ ये फादर ज्योति को मैं उस पुस्तक के प्रति विशेष अभिनंदन करते हुए उसका प्रकाशन करने की विधि की ओर ज़्यादा समय न लेते हुए उस विधि की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं आशा करता हूँ और उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद धर्माध्यक्ष जी। अतिथियों को संबोधित करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृतियाँ बीत जाती हैं, लेकिन वे एक दिन में नहीं बढ़ती हैं। यादें हमेशा आंखों के लिए अदृश्य होती है, लेकिन दिल से महसूस की जा सकती है। किसी की जिंदगी की सबसे अच्छी यादों को तस्वीरों में कभी नहीं देखा जा सकता, उन्हें हमेशा दिल से कैद किया जाता है। वे हैं स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मां साइमन पालाजा CMI के जीवन यात्रा की स्मृति के चिन्ह। अब मैं धर्माध्यक्ष मां जोसेफ CMI जी से आग्रह करती हूँ कि वे स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मां साइमन पालाजा CMI के जीवन पर लिखी इस पुस्तक का विमोचन करें। अब मैं बिशप बॉस्को पुतुर, बिशप एफ्रेम नरिकुलम, फादर जोसेफ कुन्नर CMI, रेवरेंड फादर सोनी पात्रा CMI, फादर संतोष पोतेरी एवं आदरणीय फादर जोशी तामरसेरी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ कि इसकी एक प्रति आदरणीय फादर संतोष पोतेरे CMI प्रोविंशियल सुपीरियर जी को भेंट स्वरूप प्रदान करें। थैंक यू बिशप्स। अब समय है आदरणीय फादर जोशी तामरसेरी CMI विकार जनरल से स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मां साइमन पालाजा CMI के अंतिम के अद्भुत जीवन के विषय में सुनने का। अब मैं फादर जोशी तामरसेरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वर्गीय बिशप जी के जीवनी किताब के बारे में हमें अवगत कराएं। Bishops, Fathers, Lord, Provincial, those Vicar General, our Major Superiors, Fathers, Sisters, my dear friends, especially the family members of Bishop Simon Stock.
gives me immense joy to introduce the biography of Simon Stokpala, the CMI of Holy Memory for God and His people to this August assembly gathered here to commemorate late Bishop Simon Stock on his first death anniversary today. For God and His people, a biography prepared by Mr. Mani Pius presents a holy and saintly religious missionary priest and bishop who dedicated his entire life to the mission entrusted to him. Bishop Simon Stock is a well-known person to this audience as he belonged to us, the Jagdalpur family. But there are a good number of people, especially in the Sierra Malabar Church, who have not known this zealous missionary who became the epitome of a deep religiosity and missionary commitment. He, like the other missionaries of the Sierra Malabar Church and of the CMI congregation, ventured to unknown land and people at a time when the North Indian missions were opened for the Sierra Malabar Church. They have a lot of untold stories of their missionary life, encountering new people, new cultures, new climate situations, etc. Therefore, the effort to bring out his life in Malaya was primarily intended to awaken the missionary consciousness of the Sierra Malabar community in Kerala, presenting them with a zealous missionary life of people like Bishop Simon Stock. We can expect the English version at the earliest as it is in the process of making. Bishop Simon Stock was the second bishop of the eparchy of Jagdalpur. He belonged to the first five pioneers of this mission and the first one who came to Jagdalpur to prepare the way for the new missionaries taking up the new mission in Jagdalpur. But he never claimed having accomplished anything in his life, especially with regard to the growth and development of the eparchy of Jagdalpur. Therefore, we miss in our conversations with him the idleness when we talked to him. He was mostly silent, but there was something that made him unique, exceptional, and distinct. One vital feature that made him different is his resemblance with Moses. We read in the Bible, especially in the book of Deuteronomy, chapter 34:10, that God knew Moses face to face. He is described as someone who never looked away from God. He walked with God through the ways of God, constantly looking at him. Moses told God, I pray thee, if I have found favor in thy sight, show me now thy ways, that I may know thee to the end, that I may find favor in thy sight. The book for God and His people, therefore, is primarily an account of the life of someone who, like Moses, walked with God through God's own ways, looking constantly at Him, and thus to become a holy presence for the people around him. This biography of Bishop Simon Stock, prepared by Mr. Mani Pius at our own request, was a quest into the life of Bishop Simon Stock to find out the ways he traveled. Bishop Simon Stock was not in any way known to the author personally and closely, but he took up this search to find out the unique personality of Bishop Simon Stock, who was open to God always. As described by Pope Francis in his
apostolic exhortation, Gaudete et exultate. This is an index of His holiness that He bore in Himself. Born in the Balatra family as the third son of his God-fearing parents, he became an illustrious son of the CMI congregation. To become missionary was his dream even from his own childhood, which got its realization in 1969 as Saga was entrusted to the CMI congregation, where the prayer of that time, servant of God Canisius, sent his own secretary to the new mission. Later, Father Simon Stock moved to Jagdalpur in 1972, as it was the mission entrusted to the St. Joseph's Province, Kottayam, of which Father Simon Stock was a member. He held different responsibilities in the eparchy as well as in the congregation, for which he never considered himself capable or worthy, as he made candid admissions with a sense of deep humility. But he accepted them, trusting wholeheartedly in God's providence and as God's own will and ways. Therefore, the book For God and His People presents the life of a person in such a way as to show us how God can mold and form our life if we walk with Him through His own ways without losing sight of Him. This book For God and His People, as Bishop Joseph already mentioned, is not merely a biography of a person called Simon Stock. Rather, it also presents the readers a detailed history of the mission of Jagdalpur and the method used by the missionaries to get into the life of the people of an unknown area, to open up their minds for the reception of the gospel. Therefore, this book, which becomes one of missiological relevance, speaks of the development of a local church in Jagdalpur and the history of the religious congregations associated with the growth of the eparchy. It speaks vehemently of the history of the development of the Nirmal province, Jagdalpur, and the development of all other religious congregations in this eparchy associated with the mission. It contains the missionary experiences of many of our veteran missionaries who were associated with Monsignor Paulinus Kiragat, the then provincial of CMI St. Joseph Province, Kottayam, who became instrumental in putting a strong foundation to the mission, and of Bishop Simon Stock, one among the first pioneers of this mission. This book gives vivid description of the life and culture of this region. The world God's many people who in one way or other got associated with Bishop Simon Stock and the early missionaries of the eparchy of Jagdalpur. The new mission consisted mainly of the tribal population who were marginalized and deprived of development. As the missionaries in the initial years were started concentrating on social development programs, education, health service, etc., which were the basic needs of the people. Monsignor Paulinus and his team, they had a very concrete and clear policy to start their mission or begin their mission at Tahsil headquarters, and this was the main entry point for them, which helped the missionaries to get into the interior villages. Bishop Simon Stock, who is often described as a man with few words, never spoke of those initiatives which he took up as the first social work director of the exarchate of going to villages around Jagdalpur with food forward program or other developmental schemes. As a result of reaching out to the villages, the first village mission was initiated by him at Karimnagar in 1976. St. Gregory the Great defines priesthood as becoming instrumental to elevate the people to the level of divine.
Father Simon Stock, along with his companions, tried to provide the people with a life of human dignity, with the best life opportunities and life situations. Therefore, it is apt that Bishop Simon Stock took up the motto as he was made the second bishop of the eparchy of Jagdalpur for God and his people, and this has become the title of his biography. He on the one side preferred to be content with minimum in his life, but on the other side tried to create a better life situation for the poor and marginalized tribal people of his diocese. Even when he handled many responsible positions both in the congregation as well as in the diocese over the years, he returned as an ordinary religious in the congregation, claiming nothing for himself or of his own, spending his life, retired life in prayer, reading books, etc. as his health allowed. Thus, Mr. Mani Pius, the author of the biography of Bishop Simon Stock, succeeded in exploring not only the exceptionally unique and distinctive feature of a humble religious missionary bishop who gave direction to the eparchy of Jagdalpur for almost 20 long years, but also in studying the growth and development of the eparchy of Jagdalpur. Everything was strange for this father, but through genuine effort of meeting people who narrated him about the life of Bishop Simon Stock and the life in the diocese, he succeeded in presenting a vivid historical picture of the diocese of Jagdalpur and the life of the second bishop of the eparchy, Mar Simon Stock, which will be a great treasure for the posterity to know the history of the eparchy and to the life of a saintly bishop who was simply instrumental for the growth purely because he was pushed into the leading position of the diocese and was always at the disposal of God, who is the real designer and planner of everything. Thank you very much. धन्यवाद पंडित जी। अभी हम एक छोटे से वीडियो के द्वारा स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मार साइमन स्टॉक बलाकरा सीएमआई के जीवन इतिहास की ओर यात्रा करेंगे। We should deepen our commitment and love to God. We should show through our life that we have something to share with the people. Bishop Simon Stock, CMI. A true CMI sannyasi, an icon of spirituality, a dedicated pastor, a lover of the poor and the tribals, an educationalist and a social worker. Bishop Simon Stock Balagala, CMI. Born in a traditional Catholic family in the archieparchy of Changanassery, Kerala, he kept up faithfully the spiritual heritage of his family and of the local church, which he perfected in his formation years of the consecrated life in the CMI congregation. He was a holy bishop, and let his sanctity spread its fragrance even in his passing. The motto of Mark Simon Stock, CMI, the second bishop of Jagdalpur, was for God and his people. As the third child of late Philip and Abbas Balakra, Bishop Simon Stock was born on 11th October 1935 and was founded by President Hogan.
Real affinity was developed in the mind of the Abbas CMI fathers from the very childhood onwards. Servant of God, Father Canisius was born in England. Besides his uncle, the Rajapalatra was a member of CMI congregation. He had his schooling in Waterloo, his hands in flames upon land. Having grown up in a very pious and devoted family atmosphere, he had a desire to join the seminary and to become a priest. Initial formation at London as an aspirant and completed the novitiate with Father Winston as the priest master. He made his first profession in the CMI congregation on 16 May 1958, receiving the name of Great Cardinal Saint Simon Stock. Mission was a long-cherished desire of Bishop Simon Stock. He enjoyed his being for the newly entrusted Bishop of Chandler. However, during that time, Bishop Simon Stock was the secretary of then Prior General Servant of God, Father Canisius. Bishop Simon Stock himself speaks of the reason of his desire to be a missionary. My desire was to become a priest who is with the poor and for the poor. Therefore, I wanted to become a missionary. On 30th May 1972, he was sent by Monsignor Holiness, newly appointed Exarch of Jagdalpur, to the new mission to study the possibilities, and later in July, the other members of the pioneering team of missionaries joined him. Father Simon Stock served as the Pro-Exarch, Director of Social Work Department and Cathedral Parish Priest. He initiated a lot of social service programs like Food for Work, Mother and Child, etc. and established contact with more than 25 villages around Jagdalpur. Starting of the mission at Karirga was an expression of his desire. It was at the request of the chief of the village that Father Simon Stock decided to start the mission there in a rural hut of villages which is 16 kilometers away from Jagdalpur. Abbas CMI congregation came to his support for the village mission. He initiated a social work program and a small dispensary there with the help of sisters. One of the early missions was started at Madiguda in 1978 by Father Simon Stock at the request of the people. A school, hostel for boys and girls, school, social work programs and dispensary were begun. The school and other buildings of the fathers and sisters were later demolished by anti-social elements, but with the support of the people, the missionaries remained back in the village, continued their work, and today it is one of the best Hindi medium schools of the area. कि वे स्वर्गीय बिशप साइमन स्टॉक अनुभव और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और स्वभाव से ही बहुत ही सरल, सज्जन और विनम्र व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन एक धर्म समाजी पुरोहित और फिर धर्माध्यक्ष के रूप में बहुत ही प्रेरणादायी और आदर्शमय रहा है। वे एक कर्मठ मिशनरी के रूप में पारदर्शी जीवन जी करके सुसमाचार की घोषणा अपने जीवन के अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक करते रहे। बस्तर की जनता की सेवा उन्होंने अपने समर्पित जीवन के द्वारा किया है और मैं मानता हूँ कि बस्तर को वो नहीं छोड़ेंगे। अब हम उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं जो प्रभु के पास कि हमारे इस क्षेत्र के लिए वो ईश्वर से निवेदन करें। In 1990, after the unexpected demise of Bishop Oliver's, Father Kurian Machiri was elected as the administrator of the diocese and Father Simon Stock was appointed the procurator of the diocese. Knowing that it was the will of God, Father Simon Stock accepted his appointment in January 1993 as the second bishop of the diocese of Jagdalpur, and his episcopal ordination was on 19 March 1993. Considering his new role
seriously he gave utmost priority for the growth and development of the diocese. We have lost a true shepherd and a committed CMI religious missionary who was successful to inspire people by the example of his own life. But we have gained today an intercessor, an advocate for us at the throne of grace. During his term as the successor of Bishop Paulinus, the first missionary bishop of Delta, he initiated enormous developmental programs with more expansion to interior places and different institutions in the diocese for the welfare of the people. Bishop Simon Stock, a perfect and exemplary religious with the minimum words, retained always calm and serene nature, even when he was suffering from the old age diseases, without showing any displeasure or unhappiness. His life was permeated by the Eucharistic presence, and thus he radiated a graceful aura wherever he lived. He insisted that the young missionaries should learn the language and culture of the people and wanted that the church be identified with the life of the people in culture and in its expressions. One thing I noticed, apart from this simple, humble, as a shepherd, he was available to the peace of the situation of the people. In the words of Francis, he could realize the smell of the sheep. He was with the people. Bishop Simon Stock was संभाल में एक उच्च सम्मानीय व्यक्ति तथा जाने माने मिशनरी थे, इसलिए उन्हें सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें दलिया फादर के नाम से जानते हैं। ईसाई एवं और अन्य धर्मावलंबियों के बीच वे बहुत ही श्रद्धेय और प्रिय थे। आध्यात्मिक जीवन, समय पालन, सरलता, सादगीपूर्ण जीवन, समर्पित प्रार्थना एवं विनम्रता उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। उनका धर्माध्यक्षीय कार्यकाल शांतिपूर्ण तथा समृद्ध रहा है। उनके सुशील स्वभाव के कारण वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। बस्तर के लोगों की सेवा हेतु संस्थाएं प्रारंभ करने एवं साहसिक उपक्रम प्रारंभ करने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी सहकर्मियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। बिशप साइमन स्टोक एक ऐसे मिशनरी थे जिन्हें धर्मकार्य प्रशासन की भी संपूर्ण जानकारियां थी। वे अपने शब्दों और कर्मों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे। जब धर्माध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, तब सभी मिशनरियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया था। मिशनरी कार्यों में नए और साहसिक कदम उठाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया। वर्ष 1993 में उनके पदभार संभालने जब धर्मकाल ने महत्वपूर्ण विकास किया, कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की विकेंद्रीकरण का प्रयास जताया। प्रशासनिक सुधार की ओर पहला कदम उठाते हुए उन्होंने पूरे धर्मकाल को नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल डिग्री में विभाजित किया। बिशप साइमन स्टोक जी के नेतृत्व में सेंट्रल प्रशासन से जेएनडीसी का गठन हुआ। बिशप साइमन स्टोक ने प्रथम बैच माइनर सेमिनारी की स्थापना 1998 में बुनियादी तौर पर मामले की। इसके पश्चात सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कोर्स के लिए लगाव में उर्दू माइनर सेमिनारी की स्थापना वर्ष 2000 में की। उनके कार्यकाल में अनुप्रांतीय पुरोहितों की संख्या 4 से बढ़कर 28 हो गई। उन्हीं के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वर्तमान में धर्मकार्य पुरोहितों की संख्या 50 है। उन्होंने सभी धर्म समाजों को स्थानीय कलीसिया से बुलाकर लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उन्हें धर्मकार्य में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की सलाह दी।
लगी जब हमारे प्रथम धर्माध्यक्ष बिशप जी का निधन हुआ था। हमारे पास एक उचित स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं थी। ऐसे समय में एकमात्र प्रेरक के रूप में बिशप सामने आए और उनके अथक प्रयासों से 18 अक्टूबर 1997 को एमबीए हॉस्पिटल की स्थापना की गई। गुड शेफर्ड भाषा सेंटर की स्थापना वर्ष 2009 में बिशप साइमन के कार्यकाल में ही संपन्न हुई। विभिन्न प्रेरिता इकाइयों के प्रशिक्षण हेतु ऐसे केंद्र की हमें बहुत ही आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में बिशप साइमन द्वारा किए गए कार्य एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनके धर्माध्यक्ष बनने के पूर्व धर्मप्रांत में केवल 5 स्कूल जगदलपुर, कांकेर के नगर बच्चे ही हमारे गांव में संचालित थे। धर्मप्रांत के स्कूलों की स्थापना की। अन्य धर्म समाजों को भी बिशप साइमन स्टॉक ने शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 2012 तक धर्मप्रांतीय और धर्मसंघीय स्कूलों की कुल संख्या 34 तक पहुंच गई। यह सब बिशप साइमन स्टॉक के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। बिशप साइमन स्टॉक जी प्रथम धर्माध्यक्ष के काफी करीबी थे। प्रथम धर्माध्यक्ष द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को बिशप साइमन स्टॉक ने आगे बढ़ाया। के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के इलाकों में किया। सभी समर्पित धर्मों की सहायता से बिशप साइमन स्टॉक ने बहुत से नए गतिविधियों को इन जगहों पर प्रारंभ किया। बिशप साइमन स्टॉक जी की एक ओपन डोर पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने बस्तर में अपनी सेवाएं देने के लिए नए और अनेक समाजों को आमंत्रित किया। सर जोसेफ कैथेड्रल चर्च में मिलकर आराधना की शुरुआत भी उन्होंने ही किया था। We are all impressed by his virtues, the holiness of Mount Samuel CMI. Let us thank God for such a holy evening. Imitating Christ, who was united with his Father in prayer, Bishop Simon Stubb wanted to spend his life after retirement at a prayer center called Marlow. But his provincial requested him to be in the novitiate. Accepting his request, he joined as a member of Vinayana Novitiate, Kanpuri. He led as a perfect religious, being obedient to the religious superiors for everything. During the last years of his ill health, he came to the provincial house and spent his days there. On 19 November 2022, he was called for his eternal reward and was buried at St. Joseph Cathedral, Jagdalpur on 22nd November 2022. We should deepen our commitment and love to God. We should show through our life that we have something to share with the people. Bishop Simon Stubb, CMI. Though he was to say when he was living in this world, I am 100% sure that Balaja family and Jagadalpur mission will be blessed officially with the same in March in the near future.
इस सुंदर वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए निर्मल प्रवेश और टीम को तहे दिल से धन्यवाद एवं बधाई देते हैं। सम्मान समारोह केवल उसकी उपलब्धि का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह उसकी कलात्मक क्षमता और उसके द्वारा यज्ञ अविश्वसनीय चीजों को याद दिलाती है। आज यहाँ कुछ महान व्यक्ति मौजूद है जो स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मार साइमन पलात्रा CMI की यादों में अपने प्रेम को व्यक्त करने की इच्छा रखते हैं। अब मैं महामहिम धर्माध्यक्ष मार वस्तुपुत्र को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Dear Bishop, Dr. Palakal, Bishop, great, and Bishop Dr. Palakal. Dear members of the Jagadarpur Diocese family and members of the Palakal family, we are celebrating the life of a great missionary, Bishop Abbas Palakal, on his heavenly birthday. He was a man for God and for his people, as Moses says. As I remember, he was a holy man of God and a man of few words. He was a man of few words. I remember in the Synod, bishops, especially when they get told to speak long, Bishop Simon raised his hand and said, I have nothing to say. I think he got the idea when Francis of Assisi once said to the preach the gospel always, but use words only when extremely needed. And Bishop Simon Stock was that. He was a man of few words, but he was a man, a holy man of God. Remember, when I was the Guriya Bishop in Canada, one religious priest came there to meet Bishop Simon Stock. I received him. I knew this priest. More than being a priest, he was a shrewd businessman. I don't say his name. And he introduced himself as a classmate of the Bishop Simon Stock Palakal. And he told me he was a holy man, the most holy man in his batch. And he had all his life, Bishop Simon Stock remained a novice. A novice, not of the 21st century, but the 20th century. Where people keep the rules, love the church, and pray, and lead a holy life. I am very privileged to be part of this celebration, and I thank Bishop Joseph for giving me the opportunity to come over here to be part of this celebration. And then I congratulate Father Rossi for bringing out this beautiful book. Thank you. God bless you. Thank you, Bishop, for your valuable words. किसी का भी सफलता से आसपास के लोगों को खुशी और प्रेरणा मिलती है। आज के समारोह हमारे जीवन में सकारात्मक
Dear bishops, fathers, sisters, my dear friends. To tell you frankly, I don't know Bishop Simon Struck so closely because by the time I became bishop, he was retired and one or two years present and he used to sit with just next to me, he was sitting on top of the chair. And as Bishop Bosco told, he was not talking much because he could not talk because of always coughing in the synod. He was not well, keeping well, to the old age. Once or twice when I visited Jagdalpur, I visited him in the Vivek Church. But I can tell you, though I don't know personally him, I can tell you he was very simple, he was very humble, and he was very gentle. I think that is the quality that we all missionaries should cherish in our enterprise. Let's pray, let's continue our prayer for the repose of his soul. May Bishop Simon's God enlist on each one of us to be simple, humble, and gentle. God bless you. Thank you. धन्यवाद मिस्टर जी आपके सुंदर शब्दों के लिए। जीवन यादों और खुशियों से भरा होता है, पर किसी के जाने के बाद हमारे पास सिर्फ याद ही रह जाती है और यादों की छोटी छोटी तस्वीरें जो हमें प्रत्येक पल को याद दिलाती है। अब मैं महामहिम धर्माध्यक्ष बिशप जोसेफ कुंदन CMI से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वर्गीय धर्माध्यक्ष माउस साइमन स्ट्रक पलाटरा के साथ अपने बिताए खूबसूरत पलों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। My dear friends, I knew Bishop Simon Struck in the days of our seminary days, 1962 onwards. He was in the first year of philosophy when he was in third year theology. So he was going to be ordained in the next year. From that day onwards, I knew him. And later, when he was novice master in Manchurian Novitiate, he selected me to come and hear the confessions of the novices. That way also I had an experience of Bishop Simon Struck. So today, when I stand before you, I am trying to imitate Father Bishop Simon Struck by being a man of few words. Jesus said, "Learn of me because I am meek and humble of heart." And Bishop Simon Struck learned meek and practiced it. Thank you. धन्यवाद आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। यादें जीवन का एक ऐसा झरोखा है जो हमें प्रेरणा सार्थकता देती है और उत्साहित एवं प्रेरित कर उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने का साहस देती है। अब मैं आदरणीय सिस्टर आर्मेनी DDS को स्वर्गीय धर्माध्यक्ष मां साइमन स्ट्रक पालकरा CMI के जीवन से प्राप्त प्रेरणा को शेयर करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
dear Reverend, dear bishops, Reverend Father Provincial, Reverend Father Vicar General, Father Joseph Anniversary, Vicar General, Father Thomas Padakadera, Major Superiors, Reverend Fathers, sisters, and my dear friends, सबको जय यीशु। सर्वप्रथम मैं अपनी तीर्थबंधु समाज की प्रत्येक सदस्यों की ओर से और मेरे व्यक्तिगत तौर पर पूजनीय स्वर्गीय साइमन पिताजी को उनके स्वर्गवास के पहला पुण्यतिथि पर पूर्ण हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे हमारे समाज की स्थापना में और उसके विकास में सर्वाधिक श्रद्धा रखते थे। उनकी शिक्षा, मार्गदर्शन और अगुवाई भरपूर मात्रा में हमने प्राप्त किया है। विशेषकर हमारे समाज के लिए सुदृढ़ बनाने एवं अनुशासित जीवन जीने के लिए समाज की एक सुयोग्य नियम संहिता बनाने में वे हमें अत्यधिक मदद किए थे। उनके कुशल एवं निर्माण अगुवाई से हम आगे बढ़े और आज के स्तर तक पहुंचे हैं। कृतज्ञता भरे दिल से उस पुण्य आत्मा को हम याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र वचन में कहा है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्र में धार्मिकता का प्रचार करे। सन 1972 में जब हमारे धर्म प्रांत का जन्म हुआ, तब उसकी रीढ़ की हड्डी की जैसे हमारे पूजनीय साइमन पिताजी ने इस धर्म प्रांत को बल और शक्ति प्रदान करते हुए शिशिरों की हमारे धर्म प्रांत को खड़े करने में अहम भूमिका निभाए हैं। तब से लेकर उनके जीवन के आखिरी क्षण तक वे अपने पूर्ण लगन के साथ हमारे धर्म प्रांत के विभिन्न कार्यों में और CMI नॉर्मल प्रोविंस के कई कार्यों में अनेक प्रकार के कार्य मंडलों पर उन्होंने अपने कार्यभार संभाले हैं। स्टेशन इंचार्ज से लेकर धर्माध्यक्ष तक उनका नेतृत्व स्थान पहले रहे। उनका मोटा है फॉर गॉड एंड फॉर हिज पीपल। इस आदर्श को वे अपने जीवन में पूर्ण रूप से निभाए। जैसे वे ईश्वर के साथ जुड़े थे, वैसे ही वे लोगों के साथ भी जुड़े थे। गांवों में वे घूमते और लोगों के साथ अटूट रिश्ता बनाते हुए उनके हर एक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए प्रयास किए। विशेषकर करीदगौड़ चिदगौड़ के लोग आज भी उनके आभार भरे दिल से याद करते हैं। गांव के लोगों के लिए पानी की सुविधा, शक्कर पहुंचने के लिए सड़क, घर निर्माण के लिए साधन सामग्री इत्यादि के प्रबंध उन्होंने किए हैं। इसलिए पिताजी का याद उनका दिल में आज ताजा है। दान करने का और एक कदम भी हमारे पिताजी में सार्थक होता है। यह ना तो तकेगा और ना हिम्मत हारेगा जब तक वह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त दिन इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। वे एक कर्मयोगी, मेहनती और निस्वार्थ सेवक थे। चाहे परिस्थिति कितने भी दुर्गम, विपरीत और कठिन क्यों ना हो, वे कभी थकते नहीं और हिम्मत हारते नहीं। वे आगे बढ़ते ही रहते थे। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक थे। अनुशासन, आज्ञापालन, समय निष्ठा, सरल एवं कोमल जीवन शैली, दरिद्रता का महत्व, ईमानदारी, दयालुता इत्यादि विशेष गुणों से वे संबंधित थे। वे हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे। कन्फेशन, मंथली रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस
इत्यादि द्वारा वे हमारे आत्माओं को पोषित किए। बिशप हाउस के पास रहने वाले कम्युनिटीज में वे आकर साइकिल चलाकर जाकर विजिट करते थे। उनके नम्रतादायक एवं प्रेरणादायक जीवन की हमारे लिए आदर्श करें हैं। उनका सिंपल एंड हम्बल लाइफ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फेथफुलनेस टुवर्ड्स एवरीवन एंड एवरीथिंग, पवित्रता और परिपूर्णता का जीवन, ये सब हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आज जब हम उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त यही संकल्प लें कि हम उस दैनिक जीवन से कुछ अनमोल मोतियां अपने जीवन में बटोर लेंगे और हमारे जीवन भी धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर जी। Now, I would like to invite Reverend Father Swami Palatra CMI to the dais to share his feelings and memories about late Bishop Simon Palatra CMI. May I take this opportunity to thank, first of all the bishops who are present here today, particularly Bishop Joseph Kollaparamil, who is the present bishop, and also Father Josie, and the present provincial Father Santosh, and the previous provincial while the death of the bishop happened, Thomas Kodapingara, and all the other mothers, superiors and major superiors and sisters and all the other people who have gathered. Last year at the time of the death of Bishop, I was not able to come. Father Josie and myself were in the US, so we were not able to attend the ceremony. So I made the point that I should come today. And when I was reflecting on the life of Bishop Simon Shaw, I noticed he was born in 1935 and died in 2022. There were some major events happening in the world during the 87 years of his life. The first event was World War II that happened between 1939 and 1945. And the second event was the independence of India. That also was in 1947. He was almost a teenager. And the third major event in the church was the Vatican II, which brought a great turmoil in the church between 1962 and 1965. And the fourth event I would consider the new digital media of the coming of the internet, and it was during that time he was ordained. So all these major events have contributed to the development, and the church and the world was so different than the time he was born. But he put his anchor on the Lord himself. The Pope, while he retired, the Pope who appointed him died, and the unprecedented event of the next Pope of his resignation. And all these contributed to the development of such a great personality. Even if quite a number of religious were upset due to these events which I mentioned earlier, he was anchored on the Lord because I would proudly say he was born in Paratrapani. Because, as we already heard,
My parent means my father's oldest brother was his father, and his mother was a Chama of a Churakuti family. I'm sure both family members are here present today also from Midway. And I'm sure, like Saint Chavra, he also learned from his own mother. Like this is a quote from Saint Chavra's teachings. അന്നവളുടെ കൽക്കളിരുന്നു ഞാൻ വന്നറിഞ്ഞു ദൈവത്തെ എന്നവൾ രാത്രി പാതിരാ നേരത്തും വന്നെത്തി ഉണർന്നെണീറ്റിട്ട് മുട്ടുകുത്തി നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുനേരം ഞാൻ മുട്ടിന്മേൽ ചാഞ്ഞിടും. രാജവം ദേവമാതാവിൻ പ്രാർത്ഥന രാജരാജനാം ഈശോദൻ നാമങ്ങൾ. This was 4 lines from the writing of Saint Chavra Atmanudam, where he is mentioning how he learned the prayers from sitting beside his own mother during the middle of the night. So it was the devotion to Mother Mary and all the prayers and devotion and his anchoring on the Lord learned from his own mother. But he also had a special friendship and inspired by Father Abbas CMI, another father's brother, and all the other sisters. There were quite a number of sisters and fathers in the Father's family. So I am proudly saying that all these contributed. All the fathers and all the mothers were quite religious and daily communicants, many of them. And it is in John chapter 14 verse 6 we read, Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. യേശു പറഞ്ഞു, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു. എന്നിലൂടെ ഇല്ലാതെ യാതൊരുവനും എന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഈസാനെ उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ. मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता. I'm just trying to speak a little bit of Hindi just to make you understand. I'm not fluent in Hindi. To reach the Father in heaven, as we believe in resurrection, Bishop Simon chose to live for Him and in and through Jesus, dedicating his life in the CMI congregation as a religious, a true religious. As we heard, I'm the way, the truth and the life. He also was living and understanding Jesus as the way, the truth and the life. He chose Jesus' poverty as a way of life. He had, Palaka family had quite a number of farmlands. He knew how to cultivate paddy. He was good at mechanical works. But he did not choose all these jobs as a way of life by being home. But he chose to become a religious, and he chose poverty as his way of life. And secondly, Satya. He chose Jesus' obedience as the truth of life. Kerala is one of the most educated societies in India due to the initial administrative instructions of Saint Chavra and the education given by the CMI congregation and the other members of the church. He could choose the scientific truth and other educational facilities and become a great person in the world, but he chose the obedience of the Lord and became a great religious in the CMI congregation by teaching himself of the teachings of the gospel. And thirdly, he chose Jesus' chastity as life itself. We know that while being a chaste life,
we are not able to produce children and have life. As many of the Balatra family here having a great number of children, he could have chosen family life, but he chose to become religious, and he chose to become chaste and lived not having or enjoying any physical sexual pleasures, but denying them for the life in the spirit Jesus promised. But he became very fruitful with so many novices, so many ordinations, and the massively celebrated. And as I said earlier, the way, what I heard from him himself, he has been making simple roads when he came initially to Jabalpur. Now some of the roads are highways. So he himself made or produced the way of life for quite a number of people in Jabalpur and various other areas. So through poverty, he found a way of life in Jesus. Through obedience, he found the truth of life in Jesus. And in chastity, he embraced the life of Jesus himself. So, since Bishop Simon Scott lived as true religious, he has truly heard the word and lived the eternal life as promised in St. John chapter 5, verse 24. Very truly, I tell you, anyone who hears my word and believes in him who sent me has eternal life, does not come under judgment, but has passed from death to life. जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे उन्नत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है. This is what we are expected of. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചതിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, അവന് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രത്യുത അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കും. We are all called to be enjoying the eternal life the Lord promises, and we are sure, and I am sure, and as everybody says, He is with the eternal glory of God. In Romans chapter 2, verse 7, we read, to those who patiently doing good seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा. സൽക്കർമ്മത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് മഹത്വവും ബഹുമാനവും അക്ഷയത്വവും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. We live our hope, live our life in this hope, and we would wish that we would meet Bishop Simon Scott when we are going to reach heaven. And on this occasion, as Bishop Nadigalam also said, that we have somebody in heaven who we can talk to, as we have been talking to him very personally when we lived our life on earth. Like I just remember one of the personal events when he visited me while I was in Ireland doing my studies. That event is mentioned in the book. He came to the place I was staying, and he, as usually bishops come, and he said to the people in the parish where I was working that he had some requirements in the diocese, and he gave them projects for 1,000 euros, maybe 5,000 euros, etc. But what happened when the bishop returned, after a month, and I was getting a call from the Vicar General of the diocese, I think it was Father Giro. He called me and said, we got 50,000 euros from a lady in the diocese, and the bishop is saying that he never asked for 50,000 euros, and he wanted to send 45,000 back as early as possible because he thought that that lady was
by mistake or something put an extra zero. Rather than 5,000, she by mistake put 50,000. So what happened? He only gave me this name, Philomena. I never knew this lady. So I went to the records of the parish, and I went after a month only I could find out this lady. I asked her if she really sent 50,000. It comes around 48 lakhs rupees lent. So what happened? This lady said, I gave it to Bishop Simon Storm. I was working in London for a while, and this money was with me, left alone, and I have no family, and I could send it to Bishop. And I mentioned this in order to tell us how conscientious he was, how he was honest, and how he did not have interest in keeping anybody else's money or his own. So, as the last point, I would like to thank the people of Jagadpur, first of all, for making him one of his family members. When he left the Falakara family, Jagadpur took him and made him a son of her place, Jagadpur. And all those who are here, somewhere or other contributed to his living the happy life he lived as a religious as well as a bishop. And also, I thank the CMI congregation, particularly those who served with him in the initial times when a stone he kept now grew into big churches or big monasteries or big ashrams or convents, big schools, etc. So all the little steps he took, you have accompanied him, and you contributed to all what he started with the inspiration of the Lord. So I once again thank all of you in the name of all the religious in the Palakara family and all the people who have come from Palakara family here and who are away at home also. I thank everybody who invited us also to this beautiful ceremony. We really were enjoying the time. Not only now, any time, what I experienced here, whenever I came to Jagadpur, or we all experienced the same thing, the provincial, the bishop, all the priests and nuns, everybody has this great hospitality for all of us, and you take care of us as your own. And thank you once more for keeping us all part of your family. God bless you all. Thank you, Father. The Balatra family has collected an amount of rupees 1,50,000 to create an endowment fund for education in memory of late Bishop Simon Balatra CMI. I thank the family members for their thoughtfulness and concern. The family members will hand over the amount to our beloved Bishop Joseph Balatra CMI. I invite dear Bishop and the members of Balatra family to the dais.
I thank you wholeheartedly for this contribution for the betterment of our missionary effort. This amount will be put as a fixed deposit for helping from the interest of the money, helping the poor students who go for higher studies, the poor students who will be recommended by the parish priest of different schools, so that it will be utilized and it will be remain as a endowment fund in the name of Bishop Simon Stockpile. Thank you, Mr. Sri and family members. कृतज्ञता पिता की आंतरिक भावना से प्राप्त होती है। धन्यवाद उस भावना का व्यक्त करने का स्वाभाविक आवेग है। अब मैं आदरणीय फादर थॉमस वर्तुपुरा CIB को आभार प्रकट करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Respected and loving bishops, major superiors, sisters, fathers, brothers, candidates, and brothers and sisters, the central theme during the homily of Father Santosh is zeal, उत्साह, और बिशप साइमन स्टोक जो उत्साह के साथ इस धर्मबंध को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा है आज इस पूजा विधा में और इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या। So thank you very much for your wholehearted presence and collaboration, and we just here to express our gratitude towards all of you. First of all, I express my gratitude to Bishop Joseph Kollamarpil for arranging this beautiful program so that we all get a chance to remind again about the life and situation of Bishop Simon Stoke. I also thank all the bishops, Bishop Kunardan, Bishop Ephraim, and Bishop Bosco Putru, coming from far and wide and be with us to enlighten our this gathering, as also express their love and concern for Bishop Simon Stoke as well as the Diocese of Tetrapur. Thank you, dear bishops. I express my sincere thanks to Father Josie, representing the CMI congregation, for general as well as his wholehearted effort to produce the booklet, the book, as well as an English tiny version of the booklet about Bishop Simon Stoke. He worked hard to make it completed within this short span. So thank you, Father Josie, and I express thanks from all the members of the diocese. I express my sincere thanks to Father Soni Palatra and the members of Palatra family being with us, traveling all the way from Kerala and other places, and to be with us for the last 1 or 2 days and enjoying the company here, and also experiencing that Palatra family is still joined with Chekkalpur diocese, and we are not separate. Bishop Simon Stoke and the memory is still alive. Thank all of you for your wholehearted efforts and love. I am thanking all major superiors, sisters, fathers, well-wishers, candidates, and others who are present for this function. I am also thanking all the sisters who, sisters who were behind the decoration, the stage anchoring, as well as the prayer dance. Thank you, sisters. Then the choir, the incoming choir of Father Sergeant, it is and his group. Thank you, Father Sergeant, or MC Father Manish, and also we have a good video representation by Father Abbas and his team. Thank you, Father Abbas. And also I would thank to the committee for food and refreshment, Father German, Father Tejo, and Bishop Source, members, sisters. Thank you very much for the coming meals.
And finally, I thank all of you for your faithful presence and उत्साहित होकर विश्व के इस प्रोग्राम में आए। इस उत्साह जो ईश्वर ने हमको दिया है उसको हम जारी रखेंगे। ये विश्व के साथ हमारा प्रेम है। सबको एक बार धन्यवाद। जय श्री। अभी हम नीचे चर्च के नीचे का हॉल में भोजन तैयार है, वहीं पे जाएंगे, वहाँ भोजन के लिए जाएंगे। और bishops and major superiors and PAPs family members are expected to be in the dining hall of the bishop's house. Thank you. कृपया सभी रुक जाइए। धन्यवाद फादर जी। यादों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा, पर कार्यक्रम के समापन की ओर भी हमें कदम बढ़ाना है। तो आइए चलते हैं समापन की ओर और सुनते हैं धन्यवाद के गीत। अभी मैं इस मंच पर गायक मंडली को आमंत्रित करती हूँ।
Now it is time for the dinner. The dinner for the bishops and family members is arranged at Bishop's house.